Circles exercise 10.2 question number 4 and the question number 4 is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Let's look at the figure and let AB be a diameter. AB क्या है? Diameter. So this is the diameter and PQ RS are drawn at point A and B. PQ drawn at B. Similarly RS drawn at A. Now radius drawn to these tangents will be perpendicular to the tangents. तो जो radius होती है वो tangent पर क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है. So OA perpendicular RS, OA perpendicular RS. Similarly OB perpendicular PQ. Now angle OAR is equal to 90 degree. Similarly angle OAS is equal to 90 degree and angle OBP is equal to 90 degree. Similarly angle OBQ is also 90 degree. इन सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई. Now it can be observed that angle OAR is equal to angle OBQ. Similarly, angle OAS is equal to angle OBP is equal to angle OBP. तो इस तरीके से ये एंगल्स क्या आ गए? इक्वल टू ईच अदर आ गए. Why these are equal to each other? Because these are alternate interior angle. अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो क्या आ जाए? इक्वल टू ईच अदर आ जाएंगे. इसका मतलब ये होगा कि PQ RS क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर. इसलिए क्या आ जाएगा? PQ पैरेलल टू RS, और जो कि हमें प्रूव करना था.